Had the Trump team been trying to figure out a scenario that would propel their figurehead down the path to second coming, they could hardly have done better than arrange an Easter week arraignment in enemy territory. The initial drama will be over by the time you read this, and Donald Trump will probably already have ended his much-anticipated press conference back at Mar-a-Lago, milking the Manhattan court appearance on Tuesday for all it's worth. At the time of writing, it was unclear whether this dedicated sinner would explicitly unleash his Messiah complex, but then, he's not terribly good at disguising it. There's no chance of Trump being nailed to the cross, but that minor detail is hardly likely to impede his journey to resurrection. He predictably rejected the opportunity for a quiet arraignment via Zoom and insisted on personally turning up in Manhattan. He would have appreciated a perp walk and handcuffs, but the Secret Service shot down that idea. The first-time indictment of an ex-president puts Trump in a club that has no other members. So, for that matter, did his double impeachment by the House of Representatives. Even without these particular distinctions, he would qualify as different even from his worst White House predecessors. Several were, however, guilty of crimes far more egregious than the ones Trump is expected to be charged with. Is Trump the only ex-president answerable for his crimes? The latter relate to a hush payment made to a porn star during the 2016 presidential poll campaign. It's not the payment itself that's the issue, apparently, but the devious way in which Trump's lawyer, now a witness for the prosecution, was compensated for it. It never quite succeeded in hushing up Stormy Daniels. She recounted how he told me once that I was someone to be reckoned with. Beautiful, smart, just like his daughter. That sounds like him, even though Trump has denied any payments, or even sexual encounters. As Mandy Rice Davies said during the Profumo scandal in Britain 60 years ago, well, he would, wouldn't he? We can rest assured of one thing, though, Trump won't exercise his newly acquired right to remain silent. If the news conference scheduled at Mar-a-Lago just hours after the arraignment goes ahead, it'll just be the preface to yet another sordid chapter in the Book of Donald. Much of the post-indictment commentary has focused on whether his fact-resistant base will be fired up by his prosecution/persecution. That's pretty much a slam dunk. It's harder to say whether the broader electorate will feel the same way next year, if Trump wins the Republican nomination. And that could depend to a considerable extent on whether the Democrats can come up with a better and younger candidate than the incumbent president. But there are broader questions, not least the far more egregious crimes committed by his presidential predecessors. They stretch back centuries, but even if one were to look no further than the past few decades, and ignore the routine, and arguably ongoing, mass murder in distant lands, the likes of Richard Nixon and Ronald Reagan got away scot-free for potentially treacherous crimes against American citizens. The Nixon campaign successfully scuttled efforts towards a peace agreement in Vietnam, while a dozen years later, Reagan's emissaries were scouring the Middle East in a quest for intermediaries who could persuade Iran to delay releasing the Americans taken hostage after the 1979 revolution. The seemingly successful aim in both cases was to shift the dynamics of the presidential elections of 1968 and 1980, respectively. Trump's folly lay in trying to change the election result after the event, possible because the idea that Biden could defeat him had never crossed his limited mind. There are potential charges pending in that connection, which would be a rather more meaningful legal test than the current storm, or Stormy, in a teacup. For true believers, though, it may well suffice as additional grounds for deeming him a martyr who is suffering for their sins, and that too during Easter week. The imagery serves Trump's campaign interests, even though there's little likelihood of him being handcuffed or imprisoned, let alone being obliged to dress up in a zip suit that clashes with the color of his orange skin. The American establishment, meanwhile, is on tenterhooks about the prospect of a second Trump presidency, given the proxy war with Russia over Ukraine and the drift towards what would be a mutually disastrous conflict with China. The idea of no one, not even an ex-president, should be above the law is an attractive myth, but it can hardly be taken seriously when those of his ilk conceivably guilty of crimes against humanity have never had any cause to suspect they would be held responsible.
Published in Dawn, April 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. अगर ट्रंप की टीम कोई ऐसा मंजरनामा तलाश करने की कोशिश कर रही होती जो उनके मुजस्समे को दूसरे नंबर पर आने की राह पर गामजन कर दे तो वो दुश्मन के इलाके में ईस्टर वीक के इनेकाद से बेहतर काम नहीं कर सकते थे। जब तक आप इसे पढ़ेंगे तब तक इब्तिदाई ड्रामा खत्म हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप शायद मार लागू में अपनी तवील अलमियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके होंगे, जिसमें मंगल को मैनहट्टन की अदालत में पेशी के मौका पर तमाम जरूरियात के लिए पेशी की जाएगी। लिखने के वक्त ये वाजे नहीं था कि आया ये सरशार गुनहगार वाजे तौर पर अपने मसीहा को पेचीदा बना देगा या नहीं, लेकिन फिर वो इसको मुस्तरद करने में बहुत अच्छा नहीं है। ट्रंप की सलीब पर लटकने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इस मामूली सी तफसील से उनके क़यामत के सफ़र में रुकावट पैदा होने का इम्कान नहीं है। उन्होंने मुतवक्के तौर पर जूम के जरिए पुरसुकून मुलाकात के मौका को मुस्तरद कर दिया और मैनहट्टन में ज़ाती तौर पर आने पर इसरार किया। वो हथकड़ियाँ पहनकर परपवाक की तारीफ करते, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। किसी साबिक सदर पर पहली बार फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद ट्रंप एक ऐसे क्लब में शामिल हो गए हैं जिसका कोई दूसरा रुकन नहीं, लिहाजा ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से उनका दोहरा मुआखजा किया गया। यहाँ तक कि इन मखसूस इम्तियाजात के बगैर वो अपने बदतरीन व्हाइट हाउस के पेशरों से भी मुख्तलिफ होने के अहल होंगे। ताहम बहुत से लोग उन जराइम के मुजरिम हैं जिनके बारे में तवक्को की जा रही है कि ट्रंप पर इल्जाम लगाया जाएगा। क्या ट्रंप वाहिद साबिक सदर हैं जो अपने जराइम के लिए जवाबदेह हैं? मुअख्खर जिक्र का ताल्लुक 2016 के सदारती इंतखाबात की मुहिम के दौरान एक पूरन स्टार को खुफिया अदायगी से है। बज़ाहिर मसला अदायगी का नहीं, बल्कि ट्रंप के वकील अब इस्तिगासा के गवाह को मुआवजा देने का मकरू तरीका है। ये कभी भी स्टोर्मी डेनियल्स को दबाने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका शुमार किया जा सकता है, खूबसूरत, होशियार, बिल्कुल इसकी बेटी की तरह। ये उनकी तरह लगता है, अगरचे ट्रंप ने किसी भी अदायगी यहाँ तक कि जिनसी ताल्लुकात से इनकार किया है। जैसा कि मैंडी राइस डेविस ने 7 साल पहले बरतानिया में प्रोफोमो स्कैंडल के दौरान कहा था, ठीक है, वो करेगा, है ना? ताहम हम एक बात पर यकीन रख सकते हैं कि ट्रंप खामोश रहने के अपने नए हासिल करदा हक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मुकदमे की समाअत के चंद घंटों बाद मार लागू में होने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती है तो ये डोनाल्ड की किताब के एक और घिनौने बाब का पेश लफ्ज़ होगा। फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद ज़्यादातर तबसरे इस बात पर मरकूज रहे हैं कि आया उनके इस्तिगासा जुल्म और सितम की वजह से उनकी हक़ाइक़ के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली बुनियाद ख़त्म हो जाएगी या नहीं। ये काफ़ी हद तक एक सलाम डंक है। ये कहना मुश्किल है कि अगर ट्रंप रिपब्लिकन नामजदगी जीत जाते हैं तो क्या अगले साल वसीतर राय दहिंदगान भी ऐसा ही महसूस करेंगे? और ये काफ़ी हद तक इस बात पर मुनहसर हो सकता है कि आया डेमोक्रेट्स मौजूदा सदर के मुकाबले में बेहतर और नौजवान उम्मीदवार के साथ सामने आ सकते हैं या नहीं। लेकिन इस हवाले से वसीतर सवालात मौजूद हैं, कम अज़ कम उनके सदारती पेशरों की जानिब से किए जाने वाले संगीन जराइम से कहीं ज़्यादा संगीन सवालात। ये वाक़यात सदियों पर मुहित हैं, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता चंद दहाइयों से आगे ना देखें और दूर दराज के ममालिक में होने वाले कत्ल आम को नज़रअंदाज कर दें तो रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रेगन जैसे लोग अमरीकी शहरियों के खिलाफ मुमकिना तौर पर गद्दारी के जराइम की पादाश में आज़ाद हो गए। निक्सन की मुहिम ने वियतनाम में अमन मुआहदे की कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बना दिया, जबकि 1 दर्जन साल बाद रेगन के सफ़ीर मशरिक़ वस्ता में सालिसों की तलाश में थे जो ईरान को 1979 के इनकलाब के बाद यरगमाल बनाए गए अमरीकियों की रिहाई में ताख़ीर पर कायल कर सकी। दोनों सूरतों में बज़ाहिर कामयाब मकसद बिलतरतीब 1968 और 1980 के सदारती इंतखाबात की हरकियात को तब्दील करना था। ट्रंप की हमाकत ये थी कि वो इस वाक़ये के बाद इंतखाबी नताइज को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये ख्याल कि बाइडन उन्हें शिकस्त दे सकते हैं कभी भी उनके महदूद जहन से बाहर नहीं आया था। इस सिलसिले में मुमकिना इल्ज़ामात ज़ेर इल्तिवा हैं जो चाय के कप में मौजूदा तूफ़ान स्टूर्मी
के मुकाबले में ज़्यादा मानी खेज कानूनी इम्तिहान होगा, लेकिन सच्चे मोमिनों के लिए ये उनको शहीद करार देने के लिए इजाफी बुनियाद के तौर पर काफ़ी हो सकता है, जो अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं, और वो भी ईस्टर वीक के दौरान। ये तस्वीर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुफादात के लिए काम करती है, अगरचे उनको हथकड़ियाँ लगाने या कैद करने का बहुत कम इम्कान है, लेकिन उनकी नारंगी जिल्द के रंग से मुतसादिम जिप सूट पहनना तो दूर की बात है। दरियासना यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ प्रॉक्सी जंग और चीन के साथ बाहमी तौर पर तबाकुन तनाज़े की तरफ झुकाव के पेश नज़र अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप की दूसरी सदारत के इम्कान के बारे में शकूक और शुबहात का शिकार है। ये ख्याल कि किसी को, यहाँ तक कि एक साबिक सदर को भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, एक पुरकशिश अफसाना है, लेकिन इसे शायद ही संजीदगी से लिया जा सकता है जब इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुजरिमों को कभी यह शक करने की कोई वजह नहीं है कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अखज़ शुदा बतारीख 5 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.